I will show you that plants obtain carbon dioxide from air through the stomata. So it is interesting to know, and I already explained it, that this one is the leaf, this is the front side, and this one is the back side of the leaf. So on the front side and on the back side there are some tiny pores. Either the number of these tiny pores are different, but they contain some pores, very minute pores, and through these pores air enter into the plant, and from that air plant utilize carbon dioxide to do photosynthesis. So I am with the one activity in which I will show you that plant obtain gas through the stomata from the air. So for that I need this one apparatus. कोई इसमें कुछ बहुत खास चीज़ नहीं है. आपके पास एक बॉल होना चाहिए. एक ट्रांसपेरेंट मैंने बॉल इसलिए लिया जिससे कि मैं इसमें आपको अच्छे से दिखा सकूं. सो व्हाट आई विल डू, I will take the leaf and I will dip it into the water. One leaf I will dip from the front side and the another from the back side. So this one is the first leaf, and to make it sink properly I have to put some weight on it. Yes, now it is completely sink. Yes, you can see here. And this one is the second one leaf. यस, इस पे भी थोड़ा सा वेट मैंने रख दिया है और अब ये अच्छे से वाटर में डिप हो गई है. तो बेसिकली हम क्या सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर प्लांट की लीफ के पास वो स्टोमेटा हैं, तो उनसे एयर अंदर या बाहर जाएगी. एयर तो ट्रांसफ़र होती है, प्लांट बाहर से एयर लेंगे, और प्लांट के अपने पास भी जो एयर ऑक्सीजन होगी, दैट मीन्स वो भी तो गैसियस एक्सचेंज, स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है. तो वो जो गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है. तो इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि हमारे लीफ में से क्या वाकई ही स्टोमेटा के थ्रू कुछ गैसियस पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं. नाउ यू कैन सी, अभी इसमें कोई भी गैसियस पार्टिकल आपको नहीं दिख रहा है. ठीक है, और अब हम देखेंगे थोड़े टाइम बाद, जब हम इसको देखेंगे तो हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं. सो आई एम गोइंग टू पुट इट इनटू द सनलाइट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 hours. So here you can observe the leaf, and it is easily visible the formation of small drops on the surface of leaf. And you should be wondered to see that the number of drops on the opposite side of the leaf, that means at the back side of the leaf, is more. Very hardly I can see on the top one side. So number of drops you can see on the inverted side of the leaves. It means that number of stomatas are present on the opposite side, not on the front side. And we will discuss this in the transportation chapter also, that why this happened. Actually, from the stomata water also evaporate, and that process is transpiration. So that transpiration that basically lead loss of water. So to avoid the loss of water, the more number of stomatas are present on the opposite side, not on the front side. So this activity indicate that yes, oxygen is coming out through stomata, and we can see that gas in the form of bubbles. So bubble formation indicate that some gas is coming out from the leaf. Okay, have a nice day. Goodbye.